रोल मॉडलिंग ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर। टीचर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है that they manifest appropriate behaviors in the classroom so that proper management can be achieved. As discussed earlier, teachers' role is extremely important in maintaining classroom discipline, and for that, appropriate behaviors are important by the teachers. So when teachers have warm and secure relationships in the classroom, then the students also manifest good behaviors. जब टीचर्स जो हैं वो बेहतर तरीके के साथ बात करेंगे, जब वो बेहतर बिहेवियर शो करेंगे, जब उनका स्टूडेंट्स के साथ रवैया अच्छा होगा, तो अगेन एज पार्ट ऑफ द हिडन करिकुलम students would learn the same behaviors from their teachers. So in order to teach good behaviors, it is important for teachers to manifest the same behaviors. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छी रेपो बिल्डिंग करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, एंड स्टूडेंट्स दे फील वेरी कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर्स. These are very important things that must happen in the classroom. टीचर्स को क्या करना चाहिए? What should be the teacher's role in the classroom in order to have appropriate behaviors? सबसे पहले teachers, they need to respect students. It is very, very important. Problem behaviors, they arise when teachers do not respect students. Students, in response, then do not respect teachers. तो ये कहना गलत है कि टीचर, चूंकि टीचर है, एक पावर पोजीशन में है, तो स्टूडेंट्स उसको हर सूरत में रिस्पेक्ट करेंगे. They can respect the teacher on the surface level, but they will never respect the teacher, in the heart. So it is very important for students to respect the teacher through and through. So for that, teachers must respect the students. Then teachers must show caring attitudes towards students. Students को ये महसूस होना चाहिए कि जो टीचर है वो उनका ख्याल रखती है, और टीचर जो है she cares about them और he cares about the students. ये बहुत important है. इसको गुड रेपो बिल्डिंग कहते हैं. जब आप अपने तालिब इल्मों का ख्याल रखेंगे तो तालिब इल्म जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि वो आपका ख्याल रखें. सो दिस रोल मॉडलिंग ऑफ केयरिंग एटीट्यूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि आप स्टूडेंट्स को सुने. लिसन टू देयर वरीज, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स. टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉट जस्ट टीचिंग ऑफ द टेक्स्ट, इज नॉट जस्ट मेकिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान and enacting those lesson plans. Your teaching and learning है, it has a lot to do with the lives of the students as well. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स के मसाइल को सुने और कोशिश करें जहां तक आप उनको हल कर सकते हैं करें. अगर आप ये करेंगे, then you will have caring connections with the students, and students will feel obligated to respect you and show appropriate behaviors in the classroom. इसके अलावा encourage team building. आपस में स्टूडेंट्स के अच्छे सलूक के लिए ये जरूरी है कि you have team building exercises in the classroom, जहां पर उनको पेयर वर्क, ग्रुप वर्क करने की आदत डालें ताकि वो एक दूसरे के साथ काम करें और एक दूसरे के साथ काम करके वो ये सीखें that what are the good behaviors. That is very, very important. And for that, you need to be a good team builder yourself. So you need to role model good team building measures. इसके अलावा ये बहुत जरूरी है that you take sincere attention of what students say and you basically get involved in the problems and worries of students. इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी जिंदगी में जो मसाइल हैं उनको सुने and listen, give them a patient hearing. Sometimes you avoid management problems by giving your students a patient hearing. Students should know that if they have a problem, they can straight away go to the teacher. Never say it is not my problem. If you have a student in your classroom who has a problem, then please listen to the problem so that problem behaviors are avoided. Otherwise, then you run the risk of having problem behaviors in the classroom because students feel frustrated. And you should try your best
that your students should not feel frustrated at all. That is very, very important. So be emotionally supportive. Be emotionally supportive. Involve yourself in the worries and the problems of the students so that students, they feel relaxed and stress-free in your presence. That is very, very important.